where law and finance intersect. We will gain valuable insights into the pursuing careers in law techs, from litigating cases, advertising clients directly from an expert in the field. Legal Wave. Legal Wave is an initiative dedicated to bridging the gap between theoretical knowledge and practical legal skills. Our mission is to empower young legal and finance professionals sorry, by connecting them with experienced practitioners and real world opportunities. We host seminars, workshops, and speaker sessions to complement academic learning with practical insight. In line with our goal of bridging knowledge and practice, today's event brings together law and accounting perspectives. Because tax work often requires both legal acumen and financial understanding. Through forums like this, like Legal Wave, we strive to prepare you for the professional challenges ahead and to build a vibrant community of learners and mentors. So, now, before we begin, a very housekeeping item to ensure a smooth session. Please keep your microphones muted unless speaking. You may turn on the camera if you wish, like if you want, you can open it, but it's fine to stay muted during the presentation. This will help minimize the background noises and distortion. We encourage question and participation. You can type your question in the chat box anytime you want. Later in the session, we will have a dedicated Q&A session at the end of the talk, where you can raise your hand or unmute to ask questions. We will try to address as many as possible, but अगर किसी का रह जाएगा तो हम वो इंशाल्लाह ताला after the session उसको जो है assist कर लेंगे. Please note that the session is being recorded and certificates of participants will also be sent to the attendees in the coming days, inshallah ta'ala. Now, with that out of the way, let me tell you a bit about our distinguished speaker. It is my great honor to introduce Dr. Ikramullah Haq, Advocate of Supreme Court of Pakistan and a true expert in law and policy. Dr. Ikram's career beautifully illustrates the interactions of law and finance. He founded Huzaima and Ikram, a leading tax law and advisory firm in Lahore, where he serves as chief partner. He is widely recognized as one of Pakistan's foremost authorities on law and policy, tax law and policy, and now he holds an LLD in tax law with specialization in transfer pricing, and he has served in various public and academic roles. His scholarship is prolific. He has contributed over 2,500 articles on taxation and public policy, and uh, he has co-authored seminal textbooks such as Law and Practice of Income Tax and Law and Practice of Sale Tax. And third, most important, the Practical Handbook of Income Tax. We are extremely fortunate to have him share his insight on the career paths in tax and litigation and consultancy. And without further delay, please join me in welcoming Dr. Ikramullah Haq. The mic is yours, sir. We look forward to your presentation and navigating a career in tax law. Thank you so much. Thank you very much for inviting me today. And it is indeed a very privileged position that I interact with young people to learn from them. After spending so many years in tax practice and started as tax administrator, I have seen both the sides of the picture. My only concern is that since in Pakistan we keep on changing laws so rapidly that it becomes very difficult to even get hold of what is relevant law at a relevant time. And then unfortunately in courts we have backlog of years and years.
And on a particular day when you are before a court, you have to be very well versed that which tax year, or in many cases now even the repealed income tax ordinance cases are still pending in courts. So first, very difficult task for courts and lawyers is to actually know what law was there. Most of the time, law is not quoted in orders that are impugned, or orders that are decided by the courts or by tax administrators. So every time you have to take with you the relevant provisions of the law for the assistance of court. And secondly, I would like to divulge some uh, light and some shed some light on the issue that how we should understand tax jurisprudence, especially for subcontinent, because we have still colonization's process, because we have yet not out of the process of actual decolonization. The tax laws are the same as were left by the Britishers, and whatever we have added, in fact, added further to our miseries rather than sorting out the problems. So, keeping this background in mind, I also have very serious concerns that how we teach uh, law in our universities or in our colleges, and how bar councils take care of them. Because everywhere in the world, you don't read statutes straightforward, but you have to first have a proper training in tax, for example, in jurisprudence of every law. And for tax we are talking today, you have must be aware of what is the jurisprudence. Unless you know jurisprudence, you should not go straight to reading the statutes. But unfortunately, we do that. And in UK, from where we have borrowed this system, very few people after graduating in law actually go for practice. Others work in different positions where the legal work is to be done. But going to the court is altogether a different thing here, because usually after selecting your area of specialization, then you have to have some kind of specialized diploma or specialized training in your statute as well. Otherwise, it will not be possible in this era of specialization to actually read journal principles, and then you should start practicing. For example, I have been working since 1994 with the International Bureau of Fiscal Documentation, which is a prime research institute in the world on fiscal laws. And there they have about 3,000 specialization only related to taxation. So you can understand how difficult it is to prove in this period when there is so much information and specialization is everywhere, that which particular area you are going to practice. Although you should know basic principles of every discipline, but after that, then you have to decide which particular field is your specialization, where you can excel, and where you should study further. As you know, I did my international taxation, but in that, the area was then transfer pricing, which is one of very fascinating areas. And now we are going for pillar one, pillar two approach. But in Pakistan, since government is not taking part in pillar one and pillar two, so we have no idea where, though we were very enthusiastic in the beginning to join multilateral initiative of OECD, but later on, we just refused to sign Pillar 1. And now they are in the phase of finalizing Pillar 2 approach. So tax, I will not speak much, but just touch a few things in next 10 to 15 minutes, and then I would like to know what you actually want to know, and how we should make it more interactive. As I mentioned that I have a unique position where in the beginning, after
CSS examination, I had a chance to go to, in those days, it was Income Tax Group, it is now IRS, and that was on those days Central Board of Revenue. So I worked there for say 11 years, in which there was 1 year rigorous training, but after that I had a chance to serve in different departments and in different circles, as those circles were in those days. So, in those days, it was necessary for taxation officers to learn accounting, finance, and then go for obviously different laws like constitution, starting from constitution to even sale of goods and corporate laws and whatnot. So we were lucky that top practitioners of the day were teaching us in those days, and we were um actually going from uh, a very rigorous training to practical areas then. And we were lucky in that respect that in training in those days were really good. Then I signed in 1995, and in 1996 I started practicing from Lahore High Court because I was directly enrolled because of my quasi judicial work for 10 years, more than 10 years. So I was lucky that from the very beginning, I had a chance to go to High Court directly. So I had no experience of tribunal at that time. Although as an officer, I used to go and argue cases from the tax department side for a tribunal as well. So I was well versed how tax tribunal, final fact finding authority in Pakistan works and what history they have since 1924. Now, the situation is that everything, as in other areas in Pakistan as well, has deteriorated. So, starting from training of officer to court work, everything now seems to be on decline. But at the same time, I will say that for young people, challenges are there, but there is so much room in tax practice because uh, good tax lawyers are now far and few. So, if we properly establish a kind of a system where we can train young people, and we really need them because in tribunal now they are offering the salary equal to judges of Lahore High Court. So, in coming days, they will have to expand this tax tribunal, which is federal, uh, at a very large scale because number of taxpayer will increase and with that litigation as well. Because litigation in taxes, according to my understanding in Pakistan, is excessive, but you can't control that because tax department in every case wants taxpayers to be dragged in court. If they lose case, then they will have to file appeal as a matter of routine, not on merit. So therefore, courts are so much overburdened with tax cases right from tribunal up to Supreme Court. Supreme Court these days is deciding the cases on urgent basis. So I hope that by the end of this year, in main cases, we will have some established jurisprudence on issues which are still controversial in Pakistan. My second area will be that we should know constitution well before understanding tax laws because constitutional provisions related to tax, especially after 18th Amendment, have created a lot of litigation that I will explain in by the brief manner that, as you know, every year FPR, which is de facto legislator,
because our parliaments they don't actually read finance bill and pass as it is presented to them by executive in the form of money bill. So every year we see a lot of writ petitions are filed challenging constitutionality of the provision. So it is very interesting that how every year we have some areas where still constitutional interpretation is required. The most recent example, for example, is the section 7E in income tax, where they say that if you have an open plot, they will deem that it is some annual letting value, and then they will deem 20% uh, fair market value as your rent, and then they will impose tax. In nutshell, it is a 1% tax on fair market value of asset. So the question is whether it's a tax on income or it's a tax on immovable property. And as we will discuss in the program, how you have to then interpret entry 50 part 1 of federal legislative list. As we all know, the tax provisions are only in federal legislative list part 1, and there are not many, but obviously all residual issues are now with provinces. And here there's a lot of overlapping. And still, federal government wants to grab the areas which are essentially now with provinces. And we have a lot of litigation on workers' welfare fund still, whether it is tax or not, and whether we can impose WWF after the 18th Amendment on organization which are trans-provincial, or can provinces enact law beyond their territorial jurisdiction. So every time when I look at tax laws of Pakistan, provincial as well as federal, I see that since there is no debate in public and there is no debate in the parliament as well, so we are still depending on the what I call revenuecracy, because they have certain targets to meet. So when you give legislative work to them, they enact provisions that can yield them taxes easily, rather than they should go for broadening of tax base or go for audit in risk-based cases or in risk-based criteria. So there is laziness as well as lack of competence there. And courts also take years and years to decide these constitutional issues. For example, one super tax which was imposed way back in 2013, or perhaps around that, I not exactly remember the year now, but it was a one-time levy. And these days, constitutional benches hearing Section 4B cases. So there they mentioned that it will be utilized to rehabilitate internally displaced persons. So now the question that lawyers are raising there is whether you can have taxation of the sort where you have a specific purpose, then does it can be classified as income or not? Because taxation on income and taxation other than on income or agriculture income, these issues are still not very authoritatively decided in Pakistan. We still have little um, case law where we can see with clarity whether it is a what is the dividing line between tax fee cess, or can we impose in income tax such levies that have specific purpose. So these are the issues which are there. So I think we should discuss more to learn the tax laws in Pakistan from the perspective of pending litigation in various courts. So on 7E, which I mentioned, that they say your open plot even capable of generating 20% of deemed rent on the basis of fair market value. And three high courts decided in favor of taxpayers: Islamabad, Peshawar, and Quetta, and Lahore and Karachi upheld the constitutionality. So the matter is now with the Supreme Court. I don't know how much time will constitutional bench take to decide that.
The other issue is 4C, then another super tax imposed in 2022 retrospectively, and the lot of taxpayers challenge on the basis of theory of past and closed transactions. Now, legislature, as we all know, can enact law and enact tax laws retrospectively. But what is this past and closed theory then, which is we will discuss whether past and closed transactions and retrospectivity are somehow different, or how tax lawyers are interpreting it. So even these 2-3 cases or levies or impositions can give us a chance to understand the interlink between our constitution, our tax provisions, 18th Amendment, jurisdiction, and legislative competence of federal government and provincial, as we can say, National Assembly, because largely money bill is passed by only National Assembly and recommendations come from Senate. And provincial, although 15 years after 18th Amendment have failed to impose the taxes which were given to them after 18th Amendment. So what those taxes are and why they are not imposing them, and always relying on their share in National Finance Commission from Federation, and why their overall share in Pakistan tax collection is only 0.7%. I mean, the over GDP, and also in overall tax contribution, not more than 7-8%. So that is the dilemma of the state at this moment, that after 18th Amendment, first on constitutional plank, we are not clear that this subject now belongs to whom and what are the lines of demarcation, and cases are still in the court. And secondly, obviously, still we are not clear that we should have a tax administration that should be federalized, or we should have more than 20 agencies to collect taxes alone. In federations, although distribution is according to the formula, as we have Article 160, but there is always an effort to collect taxes collectively. Now, provinces have, for example, 57.5% share in taxes, but they have no say in tax policy, tax legislation, and tax administration. So, how one can explain this, that they are the major shareholder, but only federal government decides to whom they should give tax exemption, and by doing that, they obviously erode the basis of division between provinces. For example, Balochistan has only 9% share in NFC, and if you give one plant in Karachi exemption from sale tax, or many units which are controlled by military, they enjoy a lot of exemptions otherwise. So ultimately, this affects the share of Balochistan. So my concern is that we haven't implemented even the constitution properly in tax matters. Can they table bill without, as Article 162 says, without the prior approval of the president? And what is the logic behind that? Obviously, um, president being the custodian of the federation has to see whether by giving these kind of exemptions, what will be financial impact for the provinces. So in a federal structure, what the taxation should be and how we have tackled that issue is also very interesting debate for young people to understand, and also to actively participate in these issues and comprehend them. So practice, I think it's not that you should only go to these offices of the tax authorities, and now we have even provincial Punjab Revenue Authority and Sindh Revenue Board. So they are collecting sale tax on services
And also then on sale tax and services, there's still a debate going on whether work contract which involve both supplies of goods and service, whose jurisdiction will be there. So there too we are facing a lot of ambiguity yet and have not been able to create certainty as India did by adopting a unified sale tax on goods and services and being collected under National Tax Council. So my initial thoughts are that we should start rather than going to a kind of brief for how you should be prepared for uh, tax practice, rather than starting from the above. That first of all, you should have very clear understanding of constitution, because all tax laws are, after all, subordinate legislation and must conform to the constitutional provisions. And where they are not given, for example, right to appeal even against this windfall income taxation. So then question arises that what will be fate of such a law in the presence of Article 10A. So today's debate, you are free to actually ask any question in any area, but I will stop here and I will rather love to have an open discussion with all of you. Thank you very much. So we have time for the questions. If you guys have any question for Dr. Herc, please use that raise your hand while a function and type question in the chat. I will call you one at a time. And when you ask the question, please state your name or affiliation briefly before asking and keep your question concise. Thank you so much. And जो भी questions है kindly अपने chat box में या फिर mic unmute करके बताइए. अच्छा सर, ये केस के हवाले से भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? प्लीज गो अहेड, कोई भी क्वेश्चन कीजिए आप, फील फ्री, किसी किस्म का भी सवाल पूछिए, कोई इशू नहीं प्लीज। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक केस मेरे पास आया, उसमें अ, एक इंडिविजुअल ने, जो कि फीमेल है, उसने अपनी शादी पे अपनी मदर से गिफ्ट रिसीव किया और उनकी मदर ने वो अपनी मदर से 30 इयर्स बैक वो जो गोल्ड पाकिस्तान में या इंडिया में चलता है, गोल्ड, वो 350 ग्राम्स का गोल्ड अपनी मदर से रिसीव किया था। अब उनकी मदर ने वो जीरो वैल्यू पे डिक्लेयर किया। इन्होंने क्या किया कि 2023 और 24 यानी 2024 की टैक्स रिटर्न में उनकी किसी कुलीग ने, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनकी कुलीग के कहने पे उन्होंने वो 70 लाख का मार्केट वैल्यू पे डिक्लेयर कर दी, जिसकी वजह से 176 का डिपार्टमेंट ने नोटिस कर दिया कि आप गिफ्ट को जो है वो साबित करें। तो खैर मैंने उसकी जो काफ़ी वो भी किया, उस पे थोड़ी रिसर्च भी की और फिर मैंने थोड़ा सा वो चैट जीपीटी वगैरह को, एआई को भी यूज़ किया। तो उन्होंने कहा कि आप जो है इस गिफ्ट को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये 30-40 साल पुराना वैल्यूएशन है और अगर मैं लॉ की वो रूल 78 को भी कंसिडर करूँ, ऑर्डिनेंस की भी प्रोविजंस को लूँ, तो उसको ज़ीरो वैल्यू पे हम अगर वेल्थ 176 के नोटिस की बेसिस से पहले पहले, क्योंकि अभी असेसमेंट नहीं शुरू हुई या अमेंडमेंट नहीं हुई, तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं गिफ्ट को ज़ीरो करके और दोबारा सही वेल्थ को डिक्लेयर कर दें, या क्या करना चाहिए? सिंपल बात है कि वेल्थ स्टेटमेंट में चूंकि उसकी रिकंसिलिएशन जब ड्रॉ होती है तो यूजुअली जो आपके इनफ्लोज आउटफ्लोज होते हैं वो एक्चुअल लेने होते हैं।
अब जाहिर है कि अगर आप कोई चीज ऐसी ले लेंगे तो फिर आप जब उसको रिकनसाइल करेंगे तो आपके पास वो रिसोर्सेज तो उधर नजर नहीं आएंगे ना, जिस साइड पर आप, जाहिर है आपकी वेल्थ में इजाफा हो गया जब आपने मार्केट वैल्यू ले ली। और आपने किस तरह की रिकंसिलिएशन फाइल की, वो काफी मैटर करता है इस मामले में, कि क्या आपने उसको मैन्यूवर कर लिया या उसको वैसे छोड़ दिया। असूली तौर पर तो ऐसे एसेट्स की वैल्यू को वेल्थ स्टेटमेंट में नील ही दिखाना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आपको खुद कोई आपने पे नहीं किया, वो बात की बात है कि जब आप कभी इसका कैपिटल गेन करें तो फिर आपने जो खुद भी अभी फरमाया कि वो फिर सेक्शन खुद कह रहा है कि जिस डेट को आपको ये गिफ्ट मिला उस दिन वो फेयर मार्केट वैल्यू डील कर ली जाएगी, क्योंकि मसला वही है ना, कॉस्ट अगर ना हो तो फिर आप कैपिटल गेन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट का ही कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ कॉस्ट नहीं भी थी मगर वो कैपिटल गेन टैक्स करना चाहते थे, तो फिर उन्होंने खुद उसको एक आर्टिफिशियल, या आप कह रहे डीमिंग प्रोविजन से उसको एक वैल्यू दे दी। वरना तो फिर मेरे हिसाब से लोग तो वैसे कहते हैं जी वो पूरा आपका ग्रॉस कैपिटल गेन टैक्स हो जाता, मगर मेरी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि नहीं, फिर वो टैक्स ही ना होता, क्योंकि जिस चीज की कॉस्ट ना हो उसकी फिर गेन भी नहीं टैक्स हो सकता, क्योंकि जाहिर है उसकी चार्जेबिलिटी में कहा गया है कि वो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट हो। अब जैसे इंडिया में एक मशहूर केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि किसी ने गुडविल जो थी वो खुद सेल्फ जनरेटेड थी, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी फर्म की, किसी कंपनी की गुडविल क्रिएट हो गई, उन्होंने कोई परचेज नहीं की थी, और उसकी एक वैल्यू जाहिर है उन्होंने मार्केट के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट में ले ली और एक रिजर्व क्रिएट कर लिया। तो उसको जब टैक्स करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है तो इसकी फिर कोई गेन भी नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल मुनासिब बात है कि आप इसको रिवाइज कर लें अपने वेल्थ स्टेटमेंट को, और उसमें उसको जीरो ले जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक उस सेक्शन की सामने रखकर एक आपने उस दिन फेयर मार्केट वैल्यूज की निकाल ली, हालांकि वो जरूरत नहीं थी। मगर ये कोई ऐसा भी गलती नहीं है कि जो क्योरेबल ना हो और जिसकी वजह से उसको अनएक्सप्लेन, देखिए ये डिपार्टमेंट भी हो या दूसरा, सबको हमें याद रखना चाहिए कि असल वो जिस चीज को ऐड कर सकते हैं वो तो अनएक्सप्लेन्ड है ना। अब ये कोई अनएक्सप्लेन्ड चीज तो नहीं है ना, आप उसको कह रहे हैं कि एक प्रेजेंटेशन की गलती हो सकती है, मगर जब चार्जेबिलिटी का इशू आता है जिसको अब हम सेक्शन 111 में ऐड करते हैं, पहले सेक्शन 13 था पुराने लॉ में, तो उसमें तो वो अनएक्सप्लेन्ड होना जरूरी है। कोई ऐसा आपने एसेट क्रिएट कर लिया जिसका आप सोर्सेज ना बता सके, तो फिर तो जाहिर है वो समझा जाएगा कि आपके किसी अनडिस्क्लोज सोर्स से आपने वो क्रिएट किया है, और अब उसको पूरा उसकी वैल्यू को ही आपकी टैक्स कर लिया जाए। तो यहाँ तो कोई ऐसी सूरत नहीं है, कम से कम उसकी लिंकेज तो जाहिर ही है, और कोई अनएक्सप्लेन वाली तो इसमें बात नहीं है, तो इसमें वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज हो जाएगी, कोई इशू नहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओके नाउ अक्सर इट्स योर टर्न, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। काइंडली माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लें। अक्सर नाउ इट्स योर टर्न, आपने जो भी क्वेश्चन पूछना है आप काइंडली ज़रूर पूछिए। ओके सईदा किरण, इट्स योर टर्न, आपने जो भी पूछना है आप काइंडली ज़रूर बताइए। Okay, thank you. Assalamu alaikum, sir. I'm Sayyida Kiran Hassan, and I'm a final year law student. My question is that we are talking today about tax litigation, but do you see any scope? Of course, we were talking about how constitutional issues can be seen in the, the tax litigation. Can we explore the side of ADR instead of tax litigation? Maybe solving tax disputes through mediation. Do you see any scope in that regard? Thank you very much. We have already provision of ADRC now in all tax codes. So there's great scope of tax settlement through alternate dispute resolution mechanism, and there is also now an amendment in law that state on
enterprises, they cannot file appeal. They must go for alternate dispute resolution. Obviously, it was unadvisable to for government agencies to pit against each other and file litigations. So I think in coming days, if somebody is interested in alternate dispute resolution and has sufficient expertise in tax laws, there's a great scope for that. So both in tax litigation, as I said, that because of excessive litigation, and mainly that is because of the department, as I explained the reasons for that. But scope for ADRC is huge, and young people can actually excel in that. So worldwide, they go for usually arbitration or alternative dispute resolution. But unfortunately, uh, despite the fact that we have such a huge backlog of cases, we are yet not being able to decide the issues through arbitration and ADRC. So, very valid question, and I think we have a lot of scope for this. Presently, I can tell you that thousands of cases are now being referred for ADRC because, as I mentioned, that for these corporations as well, lot of litigation was going on. For example, civil aviation case is well known where Sindh Revenue Board tried to tax the services of civil aviation, and matter went to Supreme Court, and they said, uh, although there are services may be taxable, but since it's government, if you lift the veil, so they are performing actually the functions of the state, and obviously aviation is a federal subject, and also that we are under the treaties are bound to undertake these activities. So their conclusion was that civil aviation is nothing but doing all the functions of government, and then because of Article 165, they said you cannot levy services tax on civil aviation. This was the case when civil aviation was one only authority that was working, and now they have three different layers of that. So it's always interesting, as I said, that even if you take one case and then you start pondering about that, you have a lot of learning about that. The best way to learn also is that you should have a proper case law before you, and then you should try to dissect the principles and the controversy there. Thank you so Can much, sir. I ask? Thank you so much, Kiran. Now it's Rahimullah's turn. Please unmute your mic, Rahim, and please, if you want to ask anything, go ahead. अस्सलामुअलैकुम सर, मैं LLB 8th सेमेस्टर सर मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि टैक्स लिटिगेशन में मेरा इमेंस इंटरेस्ट है, तो सर वो कौन सी बेसिक चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए अभी से बीइंग अ स्टूडेंट, और वो कौन से कवानीन है जिस पर उबूर हासिल करना चाहिए, और वो कौन सी खूबियाँ हैं जो हमें होने चाहिए टू बिकम अ प्रोफेशनल टैक्स लिटिगेटर। शुक्रिया। देखिए, टैक्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज डिमांड करता है। आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक जो है एक्टिविटीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बहुत से तो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल भी वो आपको सीखने पड़ेंगे। फिर टैक्स की अपनी जो कोड्स हैं उनको समझने से पहले टैक्स की जो मैं अर्ज कर रहा था जूरिस्प्रूडेंस भी हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, वो पढ़ानी चाहिए, क्योंकि टैक्स की जूरिस्प्रूडेंस पे मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कोई काम हमने कोशिश नहीं की। अगर आपने देखी हो तो एक किताब मैंने रुज़ैमा ने मिलकर मरतब की जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। वो एक हैंडी सी बुक है, मगर उसको सारे लोग फॉलो करते हैं। अब शायद उसका 6वां एडिशन है, ऑनलाइन भी हर वक्त अवेलेबल है, उसको रियल टाइम में अपडेट होती है। तो वो जो कोर्स की तरफ से जो भी नए प्रिंसिपल्स, अगर आप उस पर एक नज़र डालेंगे तो आपको ये सारे मौजूआत जिसका आपने जिक्र फरमाया कि क्या सीखना चाहिए, वो उनके चैप्टर से ही आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन सबसे ज़्यादा आपको इनकम टैक्स में नजर आएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से लेकर फिर उसके बाद लैंग्वेज ऑफ लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं, फिर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल, फिर जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है तो वो
टैक्स पेयर के हक में कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ होगा, फिर जो इसके चार्जिंग प्रोविजंस हैं, फिर मशीनरी प्रोविजंस हैं। सो ये खुद एक बड़ी फैसिनेटिंग स्टडी है। अब मुझे ये तो अंदाजा नहीं है कि जब हम लॉ पढ़ा रहे होते हैं तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उसके अंदर कम से कम जो हाँ कमर्शियल लॉज हैं, जहाँ टैक्स की प्रोविजंस है, उसको और ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ाएं, केस स्टडी मेथड से पढ़ाएं। अब जैसे मैं इसका रहा था कि सबसे ज्यादा मुझे जब मैं लम्स पढ़ाने जाता हूँ तो या और भी यूनिवर्सिटीज में, तो वहां भी मुझे सबसे ज्यादा मसला ये आता है कि जो असल बेसिक चीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ से सारी पावर्स एमिनेट करती हैं टैक्स लगाने की, उस बारे में हम कोई इंसाइट, और उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन उस लिहाज से पढ़ा भी नहीं होता है, क्योंकि ये हम स्कूलों में भी नहीं पढ़ाते हैं। और ज्यादा ज्यादा हमारे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा कदर वक़्त भी नहीं रही थी, और अब भी शायद उतनी नहीं है। तो उससे फिर ये एक बहुत ये प्रॉब्लम पैदा होता है कि आपको वो प्रिंसिपल्स जो है वो कभी भी सही तरीके से नहीं सीख सकेंगे। हाँ, जो रूटीन की लिटिगेशन डिपार्टमेंट में होती है कि उन्होंने आपकी इनकम ऐसे कर दी, वो बढ़ा दी, ऑडिट कर दिया, और ये वो भी तभी ज्यादा अच्छे तरीके से आप उनका जवाब बना पाते हैं जब आप मिसाल के तौर पर उनके नोटिस की अगर आप समझते हैं कि वो उसकी लीगैलिटी पे भी चैलेंज करना चाहिए, तो किन ग्राउंड्स पे करेंगे। तो पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते, कोई एलिगेशन उन्होंने ऐसा लगाया जो कि उसका ऑनस उन पे था मगर उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया है। तो बहुत से एरिया है, मगर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ को देखिए। हमारी किताब के अलावा और भी कई जगह से आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ जो टैक्स लॉज हैं वो मिल जाएंगे। तो ये बहुत पहले ज़रूरी है कि हमें जो उसके डिफरेंट प्रिंसिपल हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन के, उसके जो डिफरेंट फेसेट्स हैं, वो सारे पता होने चाहिए। और जब तक ये ना हो तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि उसको हम कंप्रीहेंड कर सकें। जैसे मैं आज कह रहा था कि बाहर जहाँ मेरा ज़्यादा तजर्बा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ तो एज ए सिविल सर्वेंट काम किया, मगर फिर मैं 96 में मैंने 4 साल पड़ी, तो उस वक्त मैंने बाहर मेरा एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। तो वहाँ तो वो स्टैचूट नहीं पढ़ाते शुरू में, वो सिर्फ आपको जूरिस्प्रूडेंस पर ही ज्यादा जोर देते हैं। तो वो फिर केस स्टडी मेथड से सीखना और रिसर्च करना चीजों को एक्चुअली जहाँ पे फील्ड में जो काम हो रहा है, और हर एक को फिर किसी ना किसी लॉ फर्म में तो जाकर 6 महीने या 1 साल काम करना ही होगा डिग्री से पहले। तो हमारे यहाँ वो कुछ डिस्कनेक्ट भी रहता है। तो मुझे कभी कभी ये होता है कि ऑल तो हमारे यंग लोग इतने टैलेंटेड हैं, सारा कुछ है, मगर हम फिर भी चीज़ों को कभी फॉर्मलाइज करने में और उसको आगे ले जाने में कामयाब नहीं। वरना अगर एक जैसे टैक्स इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन बनाया यूके ने, अगर हमने उनकी लॉ तो ले लिया मगर ये नहीं देखा कि वो एक जैसे यहाँ चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी है, उसके अंदर फिर लोग डिग्री लेते हैं, तो वो फिर फील्ड में लोग उन्हीं लोगों को एम्प्लॉय भी करते हैं, और वो लोग फिर उनमें से बहुत से प्रैक्टिस भी करते हैं। उस तरह की भी कोई चीज़ हम बनाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन आपने अच्छा सवाल किया कि यंग लोग के लिए ज़रूरी है कि इससे पहले कि वो बराह रास्त टैक्स कोर्ट्स पे जाएं और उसके प्रोविजंस को पढ़ के कंफ्यूज हों, उन्हें स्कीम ऑफ जो टैक्स कोड भी तो पहले सीखना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल इस टैक्स कोड की स्कीम क्या है ओवरऑल। मगर उससे भी बहुत पहले मैं अर्ज कर रहा था कि टैक्स जूरिस्प्रूडेंस को, अब आप टैक्स जूरिस्प्रूडेंस तो कोई एआई से भी आप देख सकते हैं, आपको सब कॉन्टिनेंट की अपनी टैक्स जूरिस्प्रूडेंस लैदर से भी उस पे ऊपर पेपर मिल जाएंगे। तो कुछ ना कुछ इन डेप्थ नॉलेज जरूर हासिल करना चाहिए, ताकि हमें फिर इसके बारे में आगे जाकर जो प्रैक्टिस करें, चाहे वो हम लिटिगेशन में जाएं, एडवाइजरी करें, या एडीआरसी जैसे अभी बात हुई करें, तो एक आपका बेसिक ट्रेनिंग तो होनी चाहिए ना कि हाउ यू विल एनालाइज द थिंग्स। आप एडवाइजरी भी तभी दे सकेंगे, लिटिगेशन भी तभी कर सकेंगे। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहिए कि जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के बाद फिर उसकी स्कीम ऑफ स्टैट्यूट को पढ़ने के बाद फिर हाँ प्रोविजंस के ऊपर नजर डालनी चाहिए। थैंक यू सर। अक्सर नाउ इट्स योर टर्न, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। Assalamu alaikum, sir. I'm law student in 6th semester in Shahid Zulfikar Al Bhutto Law College, और मैं अभी रिसेंटली प्रैक्टिस कर रही हूँ, इंटर्नशिप पे हूँ।
प्लस पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि मतलब हम लिटिगेशन में, ड्राफ्टिंग में हमें क्या चीज सीखनी चाहिए जो टैक्सेशन के केसेस में जरूरी हैं, और हम दूसरे मतलब साइड जैसे सिविल क्रिमिनल के साथ टैक्सेशन पे भी ध्यान दे सकते हैं। और आप स्कोप वगैरह हमें बताएं कि इसका स्कोप क्या है, क्योंकि हमने सुना है कि टैक्सेशन में बहुत ज्यादा इनकम होती है और जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे कैरियर काउंसलिंग में। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि टैक्स में फी भी दूसरे एरियाज के मुकाबले में बेहतर है। और यूजुअली अगर आप मिसाल के तौर पे एडजुडिकेटर से ही शुरू करें, अब एक नोटिस आया है, आपको देखना है कि ये नोटिस लॉ के मुताबिक है कि नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं अर्ज कर रहा था, होलिस्टिकली ठीक होगी, आप उसको अकाउंटिंग के एंगल से भी, टैक्स के एंगल से देखने की सलाहियत पैदा कर लेंगे, तो खुद उसका जवाब भी एक बहुत स्किलफुल जॉब है, जिसके लिए जो टैक्स पेयर्स हैं वो अच्छी फीस देने को इसलिए तैयार होते हैं कि देखिए, हर टैक्स डिस्प्यूट के अंदर फिर बहुत रकमें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ वो चूंकि फौरी तौर पे उसने फैसला भी आपका फौरी कर देना है एडजुडिकेटर ने, उसके बाद फिर अपील के मराहल शुरू होंगे। तो उसका पहली बेस के ऊपर ही अच्छा जवाब जाना और उसको इस अंदाज से करना कि ये आगे जाकर जब एपलेट वर्क भी इस पे होगा तो क्या क्या क्वेश्चन जो हैं, इंटरप्रिटेशन के क्या इश्यूज होंगे, उसने कहाँ कहाँ फैक्ट्स को सही देखा है, तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मेरा ख्याल है काम करने का मौका मिलता है और एक अच्छी स्किल जो है वो भी डेवलप होती है। तो मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आज जिस लिहाज से अब हमारे टैक्स पेयर की तादाद भी बढ़ी है और इसके ऊपर अब वो आने वाले दिनों में और ज़्यादा उनका जोर होगा, तो बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में यंग लोगों की ज़रूरत होगी, फर्म्स को भी होगी, वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर जैसे मैं अर्ज किया था कि शर्त ये है कि ये कोई बहुत सतही तरीके से पढ़ने वाले लॉज नहीं हैं, क्योंकि टैक्स लॉ में आपको पता है कि आपको बहुत ही प्रिसाइज होना है। तो उसके लिए फिर आपकी फंडामेंटल्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और फंडामेंटल्स मुझे अब अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं अपना वहाँ भी ज़्यादा, चूँकि रोज़ी में पढ़ा रहा हूँ, तो इसको डे टू डे जो कोर्सेज चल रहे होते हैं वो मैं ज़ाहिर है मुझे लिटिगेशन में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो वो मैं नहीं करता। तो मुझे अंदाज़ा नहीं कि इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या ऐसे स्किल्स के लिए कोर्सेज बनाए हैं, नहीं बनाए। अब मसलन लम्स में 5 साल का कोर्स है, मगर वो टैक्स पढ़ाते भी हैं, मगर मैं नहीं समझता कि वो टैक्स में ऐसी स्किल्स पैदा कर पाते हैं कि वो लोग जो हैं जाकर किसी बड़ी लॉ फर्म को ज्वाइन कर सकें। होना तो ये चाहिए कि ड्यूरिंग दी स्टडीज जिन लोगों का शौक हो, उनको फिर उसी जगह पे कम से कम कोर्स में जाना चाहिए, सुनना चाहिए, और एक प्रैक्टिकल सी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और बेस्ट तरीका, जैसे मैंने कहा, कि अगर आपने सीखना हो तो आप किसी भी ट्राइब्यूनल की जजमेंट्स की रिपोर्ट होती हैं जहाँ फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हुई, कोई एक लीडिंग केस लॉ पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही बहुत सी चीज़ों की समझ आ जाएगी, जहाँ फैक्चुअल के साथ साथ कोई लीगल सवाल भी पैदा हुआ था, और वो बहुत पैदा होते हैं। अगर प्रिंसिपल आप देखेंगे टैक्स लॉज की किताब, तो हजारों तरह के जो इंटरप्रिटेशंस आज तक हुई हैं। और फिर पाकिस्तान में और भी स्कोप इसलिए ज्यादा है कि ये लॉज बहुत तेजी से चेंज करते हैं, तो उसके लिए जाहिर है कि फिर हर साल कोई ना कोई नया झगड़ा खुद डिपार्टमेंट भी, यानी एफबीआर भी क्रिएट करने का, और अब तो खैर सूबों की भी सारी टैक्स एजेंसी जो हैं वो इस काम में तो बहुत माहिर हैं कि वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है अपने, क्योंकि वो जाहिर है उनकी भी कोई खास ट्रेनिंग तो नहीं है लीगल ड्राफ्टिंग में या समझ कर अमेंडमेंट करने की। और बदकिस्मती यही है कि अभी तक हमारे लेजिस्लेटर्स को तो ये काम नहीं आता कि वो खुद लेजिस्लेशन करें, तो वो ब्यूरोक्रेसी पे ही डिपेंड करते हैं, और उसकी वजह से ये काम में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, जो जाहिर है कि वैसे तो डिज़ायरेबल नहीं है, मगर टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए तो कम से कम वो एक जन्नत का सा समा पेश करता है कि इतने ज़्यादा उनको मौके मिलते हैं कि वो इसमें प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आपको इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें तो फिर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ओके सर, तो खुशबख्त ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट मेनी सिटीजन्स फील देयर टैक्सेस आर नॉट utilized effectively. How can the government build trust and transparency in the tax collection and spending?
Given Pakistani's income challenges, what tax reform do you believe could significantly boost the economic growth while ensuring fairness in tax collection? जी, जाहिर है इसमें तो बहुत हमने लिखा, मेरा ख्याल है कि हर हफ्ते ये एक आर्टिकल इस पे लिखना होता है, और बावजूद इसके कि बहुत डिबेट करने के तरीके बताने के, जो दुनिया में अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, हाँ वो करने के भी, फिर भी हमारी जो टैक्स मशीनरीज हैं वो दिन ब दिन खराब होती हैं। अब इसकी एक बुनियादी वजह वो ये है कि आप जब किसी टैक्स कलेक्शन एजेंसी को टैक्स पॉलिसी और टैक्स लेजिस्लेशन भी दे दें तो इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं हो सकती। और वैसे भी ये हमारे सुप्रीम लॉ जो है लैंड, उसके भी खिलाफ है। तो ट्राइकॉटमी का कॉन्सेप्ट हमें सबको पता है कि इस आइन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो ये है कि तीन अदारों ने अपना अपना काम इंडिपेंडेंट करना है। कि जाहिर है कि कानून बनाना है वो तो लेजिस्लेचर का काम है, उसको इम्प्लीमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, एग्जेक्टिव ने जिसको हम कहते हैं, और फिर उसकी जब भी इंटरप्रिटेशन करनी होगी तो वो हमारी लेजिस्लेचर के बाद जो असल इंटरप्रिटेशन का काम है वो तो फिर अदलिया ही करती है। अब ये जो मसला है कि आपने एक एग्जेक्टिव को ये काम दे दिया, अब बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि जहाँ चले यूके की एग्जांपल भी ले लें, जहाँ से जाहिर है ये लॉ तो सारे वहीं से चल रहे हैं, तो वो तो फिर स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं वो उनका बड़ा इफेक्टिव रोल होता है। और लेजिस्लेशन वहाँ एमिनेट ही, जो कि आपको पता है कि पार्लियामेंट से शुरू होती है और वो बनाते हैं लॉ। और एजेंसी का काम जो इनलैंड रेवेन्यू वहाँ पे है, या हर मजिस्ट्रेट सर्विस भी, अब तो वो भी अपना जाहिर है कि वहाँ भी जो आ गए, तो वो मजिस्ट्रेट सर्विस है, वो फिर उसका काम तो पॉलिसी बनाना या टैक्स लॉस को तो मेंट करना नहीं है, वो तो सिर्फ कलेक्शन एजेंसी, और वो एफिशिएंटली करे। वो आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है, अब सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज भी हम भी काफी हद तक कैप्चर कर रही हैं, हमारी एजेंसीज भी। एटलीस्ट अगर आप कभी जाकर वहाँ अपने प्रोफाइल पे देखना चाहें तो वो आपको पता चल जाएगा, अगर आपकी कोई इनकम है उस पर कोई विद होल्डिंग हुई है तो उसका सारा रिकॉर्ड तो उनके पास भी अब आ जाता है। मगर बुनियादी बात यही है कि जो सवाल ये उठाए गए हैं इसका ताल्लुक अब तीन चीजों से है। देखिए, रूल ऑफ लॉ जो है उसकी के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। और रूल ऑफ लॉ टैक्स में क्या होगा कि लॉज जो हैं वो पब्लिक डिबेट के बाद फेयरली बनाए जाएं, और वो पार्लियामेंट बनाए, ना कि एग्जेक्टिव को हम ये कहें कि जी आपने ये इतना बजट मीट करना है तो आप टैक्स लॉ भी खुद बनाएं। तो रूल ऑफ लॉ क्या होगा टैक्स लॉ में, बुनियादी यही होगा कि हम ये वहां से हटाएं, एक टैक्स पॉलिसी बोर्ड इंडिपेंडेंट बनाए जिसमें जाहिर है कि स्टेक होल्डर्स भी हों। और वो है भी एफपीआर के एक्ट में, मगर उन्होंने कभी उस पर अमल नहीं किया। और अगर इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी, किसी फिजिकल हमारे पास सीट ऑफ एक्सेलेंस हो जहाँ रिसर्च हो, और वहां से एमिनेट करे कि हमारे क्या इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, हमें टैक्स जो है वो कैसे लगाना चाहिए। अभी तो हमारे टैक्सेस इतने हाई हैं और इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि जाहिर है कि ना टैक्स कलेक्शन दुरुस्त होती है, और ना हम सब लोगों को टैक्स के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए उनको अपने वॉलंटरली कोई इंसेंटिव दे पाए हैं। अब इतनी मुश्किल रिटर्न अंग्रेजी की 17 पेज की कौन इसको फिल करना, मेरे ख्याल में लॉ स्टूडेंट भी किसी को बैठा दें तो उसको भी मुसीबत पड़ जाएगी। और उन्हें क्या, हमें भी जो इनकी इतनी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कई सालों की, वो भी परेशान होंगे कि भाई ये किस तरह की टैक्स रिटर्न डिजाइन हुई है। अब जो इसका असल पहलू है कि सिटीजन्स के साथ ताल्लुक कैसा हो, अब वो एक क्विड प्रो को होता है, टैक्सेस के बदले में लोगों को दूसरे ममालिक में यूनिवर्सल पेंशन मिलती है। फिर ये होगा कि वहां पे सोशल सिक्योरिटी भी वही एजेंसी देती है जो टैक्स कलेक्ट करती है। जब उनके पास डेटा है तो उन्हें फिर ये भी तो पता है ना कि कौन आदमी जो है वो सबसिस्टेंस लेवल से भी नीचे बेचारा लिव कर रहा है। तो एक तरह का उनके पास सबका इकोनॉमिक प्रोफाइल होता है, और फिर उसी की बुनियाद पे वो एजेंसी जो है वो दोनों काम कर रही होती है। जहाँ रेवेन्यू ड्यू है वो भी इकट्ठा कर रही होती है, और जहाँ सोशल सर्विसेज के लिए फिर उस जाहिर है अगर आपको क्विड प्रो को नहीं होगा, आपको हेल्थ एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट्स जितने भी हमारे यहाँ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक तो रियासत दे नहीं पा रही, तो वो फिर बड़ा एक इशू खड़ा हो जाता है कि वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, वो एरोड हो जाता है। और उनकी जो बिल्कुल एक सब ये कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। तो अभी जितनी भी टैक्स एजेंसीज हैं उनका यही मसला है कि वो चूंकि हाई हैंडेडनेस इसलिए करती हैं कि आपने उनको लेजिस्लेशन भी दे दी और टैक्स टारगेट भी दे दिए, तो बस फिर तो वो अपनी मनमानी करेंगे ही।
तो ये सवाल बहुत दफा हमने इसको एड्रेस किया है कि आप हमें एक तो इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज बनानी चाहिए, फेडरलाइज्ड टैक्स एजेंसीज बनानी चाहिए, और वो ऐसी हो कि फिर वो उन लोगों को इनकम सपोर्ट जहाँ देनी है, जहाँ सोशल सिक्योरिटी के नेटवर्क हैं, फिर हमें यूनिवर्सल पेंशन की तरफ जाना, लोगों के पास इंसेंटिव होगा कि भाई मुझे रियासत भी तो लुक आफ्टर करनी है, तो वो यकीनी तौर पे वॉलंटरली टैक्स पे करने के जो कुछ दुनिया में होता है वहाँ पे लोग वॉलंटरली टैक्स पे करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया होगा कि हर मोबाइल यूजर के ऊपर जो है वो 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स। अब इसकी तादाद तो 140 मिलियन लोग ये टैक्स एडवांस बिल के साथ दे रहे हैं, किसी को पता भी नहीं, मगर हर पाकिस्तानी इनकम टैक्स पेयर बन गया। मगर फिर वो रिटर्न तो उसमें से 2% लोग भी फाइल कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और उनमें से भी 40% से ज्यादा नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये डेटा तो आज की दुनिया में जहाँ अब टेक्नोलॉजी पे हम खड़े हैं, ये मालूम करना कौन सा मुश्किल है कि बायोमेट्रिक से जिनके पास नंबर है कौन से सिर्फ स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स जो है फिर वो सारे किस पे इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से ये चीजें हो सकती हैं। Okay, now it's Muhammad Ahmad's turn. Please unmute your mic, Ahmed, please, and ask the question. Yes, yes. Thanks for giving me opportunity. My first question is that why are you laughing? Okay, fine. Just I wanted to ask about here about text there is no more knowledge, and in litigation there is much money. So please tell me something. That's why I wanna choose this profession. As I mentioned that obviously every tax dispute or litigation has a cost, and because the huge money is involved, so whosoever will tackle tax dispute uh, competently and will deliver, taxpayer will love to pay him. But the issue is, are we preparing the people, as I have mentioned time and again, that they can handle tax litigation to start after their degree? Are they competent, or they are familiar with to just go and tackle the? Obviously, if I am a teacher there, I will give them actual life cases in notice and ask them that how they have to prepare a reply for that, because it's a specialized knowledge, so you have to understand that properly. If we are well versed with that, then obviously there is no problem, and one can easily go and market is there. There is no problem. Okay, thank you. I got it. So another question is that so a criminal lawyer and a tax lawyer, if an advocate have command on taxation and related laws, can he get more and earn money more than a criminal lawyer? So please tell us. There are huge, chance of, as far as earning levels are concerned. Even a huge multinational companies or banks, their tax run into billions of rupee of a single organization. So all laws who have capacity to deal with their affairs, they can they are making a lot of money. As far as criminal side is concerned, I don't have the numbers, but obviously there too, uh, in cases where there is stakes are high, a lawyer must be taking huge money. But since criminal system is broken, and obviously cases are usually manipulated by law enforcement agencies, so uh, I'm not sure what kind of litigation they are and what kind of money they are making. But since I am in tax practice for the last now almost 30 years after leaving service, so I can say that here you have great scope, but comparing the two depends upon the level of expertise and one kind of cases you are handling. But tax laws, as I said, when their implication comes to uh, taxpayers who are
having income in billions is very high, and since stakes are very high, so fees accordingly quite handsome. Okay. Give a chance to another student, then I will ask later. Thank you, sir. Okay, I mean, now it's your turn. Amin, can you hear me? Please mute your mic and question पूछ लीजिए सर से अभी अगर जो आपने हाँ रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं फिनांस बिल जो अभी चंद दिन पहले आया, उसमें कुछ चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं जो कि जब हम बैठ के कुछ लोग डिस्कशन करते हैं ना, तो उसमें एक टर्म यूज करते हैं, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ लॉ बिहाइंड दिस। तो वी नीड कमेंट्स फ्रॉम सर कि इसमें इंटेंशन ऑफ लॉ क्या है रिसेंटली, कि ये कारोबार वगैरह बंद कर दें सब लोग या क्या करें। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस थे उन्होंने 2 मई को इशू किया है, ये तो वैसे भी अनडिजायरेबल है क्योंकि पार्लियामेंट मौजूद है, सेशन भी आपको पता है चल रहे थे, और भाई एक आध दिन सेशन को इधर उधर करके और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 89 में जरूर तस्करा है, मगर वो तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। और शुरू भी यहीं से होता है कि जब पार्लियामेंट और सेनेट सेशन में ना हो। अब मनी बिल भी आजकल 18th अमेंडमेंट के बाद पार्लियामेंट में जाने के लिए उसकी भी शर्त यही है कि वो कम से कम 15 दिन का सेनेट को भी टाइम है कि उसके ऊपर अपनी राय देगा। अब ऑर्डिनेंस तो जिस दिन पेश होता है तो वो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन में है कि समझा जाएगा कि एज ए बिल ले डाउन हो गया। और अगर किसी हाउस ने उसके ऊपर वोट करके मेजोरिटी ने कह दिया कि जी इसको मुनासिब नहीं है, तो वहीं किल हो जाएगा। नहीं होगा तो ठीक है, 120 डेज तक उसकी लाइफ है, फिर एक फर्दर लाइफ दे सकते हैं। अब ये तो इन्होंने कोशिश की कि हमें, क्योंकि बजट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, और अमेंडमेंट क्या की है कि अगर किसी जगह भी कोई केस पेंडिंग है और हाई कोर्ट का फैसला या सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, तो फौरी तौर पर वो आपको जो है वो टैक्स रिकवरी, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट सीज करके लिए। ये आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि ये तो वैसे भी अब आप स्टैट्यूट के अंदर तो कह सकते हैं नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग, सारे लॉ को आप ओवरराइड कर लें, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस वक्त फंडामेंटल राइट के तौर पर 10A है, जहाँ आपकी जो सिविल लाइबिलिटी है वो फेयरली डिटरमिन होनी है, आपको पूरा मौका मिलना है। अब इतनी तेजी से उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगर फिर टैक्स पेयर कहीं हाई कोर्ट में जीत गया तो उसको फौरी तौर पे रिफंड भी मिल जाएगा। तो ये एक हाई हैंडेडनेस जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब एजेंसी को आप कहते हैं कि आपने इतना टैक्स कलेक्ट करना है, अब उनका टैक्स का शॉर्टफॉल 807 बिलियन का है, अगले 2 माह में उन्हें पता है कि हम हर तरह की हाई हैंडेडनेस इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ ये बात काबिल गौर है कि एक हाईएस्ट प्रेसिडेंट का ऑफिस इन्वॉल्व, जाहिर है यहाँ से एडवाइस आए, प्रेसिडेंट ने वैसे तो करना है, मगर कैबिनेट ने भी इसको पास कर दिया, और फिर इसके बाद ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज भी हो गया। तो ये हमारे खुद जो पॉलिटिशियंस हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सवाल तो उनके ऊपर फिर आता है। चलिए हम एक तरफ से एफबीआर को हटा भी देते हैं, उन्होंने तो ये करना ही था, क्योंकि अब आप एक ऐसी टैक्स एजेंसी से जिसके आपने टारगेट भी दिए हों, जिसका वैसे भी ओवरऑल मिजाज चलिए बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो, और वो हाई हैंडेडनेस ही करना चाहते, तो उसके ऊपर फिर चेक एंड बैलेंसेस क्या है, ये तो उन्होंने बनाया भी होगा तो खुद तो नहीं पेश कर सकते ना। जाहिर है कि ये उसका एक तरीका कार है कि अगर आप ऑर्डिनेंस भी करेंगे तो वो जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसके में तो अब तयशुदा है ना पहले कैबिनेट में, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का वर्ड जब इस्तेमाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कलेक्टिवली, यानी प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, तो ये इसका मतलब समरी अप्रूव हुई, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास उनकी रिक्वेस्ट गई तो उन्होंने कर दिया। मगर किसी ने भी देखा कि हम किस तरह का लॉ पास कर रहे हैं, यानी कि अगर आप फेयरनेस की बात करें तो फिर
कैसे मैनुअल्स किया कि इसमें ये भी प्रोवाइड करते कि भाई अगर कोई टैक्स पेयर जीत जाएगा तो उसको फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि हाई कोर्ट का फैसला तो भर के फाइनल नहीं होता, उसके खिलाफ आपका राइट टू अपील है सुप्रीम कोर्ट में भी 60 डेज का, तो उसको पहले कैसे प्रीएम्प्ट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं मैं उसी दिन आपसे रिकवरी ले लूंगा। खुद लॉ में लिखा हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट केस हार जाए और वो रिफंड ना देना चाहे उसके बाद, तो वो फिर उसी हाई कोर्ट से पहले जाके दरख्वास्त करे कि जी इसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टे करें कि हम रिफंड ना दें, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में 60 डेज में इसकी फाइल करें लीव टू अपील और वहाँ इस ऑर्डर को सस्पेंड करवाएं। तो देखिए वो तो रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस का तकाजा तो यही था कि इस तरह के लॉ जो है, और इससे फिर हमारा इमेज भी खराब होता है। बिजनेसमैन तो जाहिर है इसको एक हॉस्टाइल प्रोविजन लेंगे ही, मगर ओवरऑल भी अगर आप इन्वेस्टमेंट भी चाह रहे हैं और इस तरह के लॉ भी पास कर रहे हैं जिसमें आप क्लियर एक इशारा दे रहे हैं कि हम टैक्स जबरदस्ती वसूल करेंगे। अब अगर किसी का आप बैंक अकाउंट फ्रीज कर दें और उसने अगले दिन कोई अपना, चलिए रॉ मटेरियल ही क्लियर करवाना हो, अभी उसने कोई बैंक से, जाहिर है आगे के पास एक लाइन होती है फंडिंग की, और वो उससे पैसे ले कर रहे होते हैं, तो मैं अभी अपने अकाउंट में एक लोन के तौर पर ही वो आएगा ना एक तरह से, तो और आप उसको ले लें, फिर किसी ने अगले दिन तनख्वाहें देनी हो, आप ऐसा मौका हो, तो इस तरह की प्रोविजंस बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होती हैं। आप ये बड़ी बड़ी कंपनी से सिर्फ अगर टैक्स लेना चाहते हैं तो वैसे भी कहाँ भाग के जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे बैंकों से इनका 4B का इशू भी चल रहा हो, 4C का भी चल रहा हो, 99D यानी कि वो जिसको हम विंडफॉल इनकम कहते हैं वो भी चल रहा हो, तो अगर उनको टैक्स अल्टीमेटली फाइनलाइज हो जाए तो उनके खिलाफ तो पे कर ही देंगे। लेकिन इस तरह का लॉ बनाकर हम एक हरेसमेंट की फजा कायम कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि इसमें इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन अगर कोई करना चाहेगा, कोर्ट्स तो ये देखेंगे कि चलिए ठीक है जी अभी 120 डेज है, आप देख लें, हम तो स्ट्रिक्ट लैंग्वेज पे जाएंगे, आप बताएं आपका कौन सा फंडामेंटल राइट है। पर इसको रिट करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा जो मैंने पॉइंट्स बताए कि जी इसमें हमारे फंडामेंटल राइट की जो 10A है उसकी वायलेशन हुई है। वो रिट्स तो अभी पेंडिंग ही होगी, इतनी देर में जो है वो रिकवरी भी शायद कर लें। और इतना इफेक्टिव आजकल है भी नहीं कोर्ट का सिस्टम जो इस तरह की रिलीफ दे सके। और स्टेट यही वावेला भी करती रहती है कि जी हमारे फंड्स, हमें पूरा टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, तो वो बहुत सी अपनी नालायकी को छुपाने के लिए भी इस तरह की हरकत करते हैं। मगर बेसिक फ्लॉ तो वही जो मैंने आपसे अर्ज किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पे तो इलेक्टेड लोगों की आएगी ना, कि उन्होंने इस तरह का लॉ क्यों पास किया। वो कि हमें पता है कि वो तो पढ़ते भी नहीं है कि कौन सा फाइनेंस बिल कैसे पेश हुआ है, वो तो वैसे ही पास हो जाता है। भाई ये एक ट्रेजेडी है जिसको मैंने कहा था कि ये हमारे यहाँ फिर ये रूल ऑफ लॉ टैक्स कोड्स में तो बिल्कुल नजर नहीं आता। So, without any further ado, sir, I would like to invite Chairman Legal Wave Qazi Arbab Ahmed. Sir, आप प्लीज आए, अपना माइक अनम्यूट करें, आपने जो भी कहना है आप प्लीज कहिए। काजी अरबाब अहमद। काजी अरबाब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और फिर बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत मशहूर हूँ आपका बतौर फाउंडर ऑफ लीगल वेव, और बाकी टीम भी आपकी बेहद मशहूर कि आपने हमें वक्त दिया। और जो वो कुछ हमने सीखा आपसे कि जो हमें 5 ईयर्स के भी जो अपना एरा है उसमें भी नहीं ना सिखाया गया। अब हम फाइनल ईयर के बच्चे हैं, लेकिन हमें इन इन इन, इन सारी बेसिक्स का नहीं था इल्म, बट आपने हमें वो चीज़ें बताई। और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे बतौर शागिर्द कि आप कुछ ऐसा हमारे लिए एक वे लेके आए, आप जैसे असातिज़ा के जो देखें आप लम्स में पढ़ा रहे हैं ना, यूनिवर्सिटीज नस्ट हो गए, लम्स हो गई, या जो बड़े एक इदारे हैं उनमें तो कुछ ना कुछ दिया जा रहा है बच्चों को। बट जो मेजॉरिटी हमारे लॉ के बच्चे हैं वो मिडिल क्लास एक तबके से, कॉलेजेस से हैं, वहाँ पे हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता, बिल्कुल हमें, बल्कि गाइड ही नहीं कि हमारा
जो एक जिद्दत का इस वक्त का हमारी मॉडरेट एरा का जो हमारी नीड है टैक्सेशन की या जिन फील्ड्स की, हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता है। जबकि आज आपका जस्ट 1 आवर का जो लेक्चर है, इसने बहुत से बच्चों के बहुत से सवाल क्लियर किए हैं जो कि 5 साल के एरा में नहीं होते। तो मेरी अर्ज ये थी, एक रिक्वेस्ट थी कि कुछ ऐसा लेके हैं वे कि हम एक आम जो बच्चे हैं लॉ के, जिन्हें नई फैसिलिटीज मिलती, वो भी फैसिलिटेट हो सकें और वो सीख सकें, या कुछ ऐसी फॉर्म्स हों इस्लामाबाद में, या कोई ऐसा वे हो कि जिससे आप हमें मुस्तफीद कर सकें बतौर शागिर्द। हम यही अर्ज कर सकते हैं और बाकी बच्चों के बिहाफ पे मैं आपसे यही अर्ज रख सकता हूं कि हमें ऐसे वेज दिए जाएं कि हम सीख सकें, क्योंकि हमें कॉलेजेस ना यूनिवर्सिटीज में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, जो एक मेजोरिटी तबका हमारे यहाँ कॉलेजेस में पढ़ रहे लॉ के साथ मुंसलिक है। तो मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और इस पे प्लीज आप जो भी कुछ एक वे हो उसमें हमें गाइड करें जरूर। जज़ाकल्लाह खैर सर। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हम ऐसी एक वर्चुअल भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें हम कम से कम महीने में 1-2 लेक्चर्स रख लें, जिसमें फिर टैक्स लॉज की बुनियादी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाए और वो उसको क्लासरूम का माहौल बना सकते हैं। मैं हाजिर हूँ, किसी वक्त भी इसको हम फॉर्मलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो ख्वाहिश होगी कि जो थोड़ा बहुत हमने सीखा वो लोगों तक भी पास ऑन करें। इसलिए किताबें तो मौजूद हैं, प्रैक्टिकल हैंडबुक भी, जैसे मैंने इसका प्रिंसिपल ऑफ टैक्स लॉ भी, जो बुनियादी किताबें समझने के लिए वो तो लिख दी हैं। वो फिर अब जो है वो रियल टाइम में अब तो डिजिटली भी हमने उसको जो है वो पेश कर दिया और उसको डेली बेसिस पे हम अपडेट भी करते हैं। मगर जाहिर है कि रियासत भी अपना काम नहीं कर रही कि स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड के लिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेस होता, लोगों को प्रॉपर वहाँ पे ट्रेनिंग होती, डिग्रीज मिलती और उनके लिए, क्योंकि फील्ड में तो बहुत गुंजाइश है, बहुत इसमें जॉब्स भी हैं। मगर प्रॉब्लम यही होती है कि जब तक आप उसमें स्पेशलाइजेशन है तो एक रिक्विजिट किस्म की आप उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे कि वो पहले दिन जाए तो वो सेल टैक्स की रिटर्न फाइल कर। अब देखिए, सेल टैक्स की पाकिस्तान में एक अदारा जो चलिए एक सूबे में भी काम कर रहा है, उसको भी एक सेल टैक्स की देनी है, गुड्स की, फिर एक सर्विसेज की देनी है। मगर जैसे हमारे बैंक्स क्लाइंट्स वगैरह, उनको तो 60, अब देखिए मतलब 5 जगह उनको रिटर्न्स नहीं 6 जगह फाइल करनी पड़ी। एजे के भी अगर मैं शामिल कर लूँ 4 सूबे, फिर वफाक, यानी कि 5 तो ये हो गई और वहां भी छठा। तो वो साल के अंदर देखिए उसकी हर महीने कितनी रिटर्न्स बनेंगी और इतनी फिर उसमें परपेचुअल किस्म की लिटिगेशन भी होती है। और जहाँ पे जितने बड़े टैक्स पेयर होते हैं फिर उनके नोटिस भी उतने ज्यादा आते हैं। तो वो तो बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत भी है कि वो उन बैंकों में भी मुलाजमत कर सकते हैं जहाँ कंप्लायंस के डिपार्टमेंट हैं, जिन्होंने, क्योंकि डेटा इतना बड़ा है, हजारों ट्रांजेक्शन है रोज की, लाखों, जो उन्होंने उसको रिपोर्ट करना है। तो अगरचे इन फील्ड्स में बहुत गुंजाइश है, मगर अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा एक, और आपने भी उसकी तरफ इशारा फरमाया कि चूंकि एक डील आपकी कोई उसमें जो इस वक्त इंडस्ट्री है उसकी जहाँ ये काम होना है और उसका और तलीमी इदारों की आपस में इतनी डी लिंकिंग है कि वो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी खराबी भी है। क्योंकि बाहर तो ये इंश्योर किया जाता है कि इंडस्ट्री के लोग कहते हैं जी हमें इतने लोग चाहिए, फिर यूनिवर्सिटीज उसी लिहाज से उनके कई जगह तो कस्टमाइज करके भी ट्रेनिंग्स के अपने कोर्सेज को डिजाइन करती हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी गुंजाइश है कि हम जो टैक्स का बिल्कुल ही अभी तक किसी फॉर्मल ट्रेनिंग का बंदोबस्त नहीं किया गया है। तो ड्यूरिंग अगर जिन लोगों ने माइंड बनाना हो कि हम ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनको ट्रेनिंग तो मिल जाए, तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, हम मैं अपने ऑफिस से भी 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है उसमें, बेसिक असूल समझा सकता हूँ। बल्कि अच्छा है जितना भी डिबेट किया जाए तो इंसान सीखता ही रहता है और नए नए केस भी सामने आते रहते हैं। तो यकीनी तौर पर हम इसमें आपके साथ जब आप चाहें हम हर तरह की जो है वो इसके लिए हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज तो पहला इंटरेक्शन था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको हम फार्मलाइज भी कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं होगा।
सर बहुत बहुत जो शुक्रिया आपका। और मैं आपको बताऊं कि लिटरली हमारा इतने जो सेशंस हुए हैं वर्चुअल, बट ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन था कि जिसमें हमारे पास बहुत से पर्सन ने, हत्ता के जो लॉ की फील्ड से नहीं भी थे, हमें स्केन्स इंस्टीट्यूट के बच्चों ने, आईसीएमए के, हमें एसीसीए के बच्चों ने इतना हमें किया अप्रोच और आपको सुनना चाहा। तो मैं अगेन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह हम वेरी सून आपके ऑफिस आएंगे लाहौर, और हम वहाँ भी आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जब भी इस्लामाबाद का आपका प्लान हो, आप हमें बताएं। हम यहाँ पे लार्ज स्केल गैदरिंग पे एक बेस्ट वर्कशॉप रखेंगे, जो कि हम मशकूर होंगे कि आप हमें उसमें भी वक्त देंगे। तो बतौर शागिर्द हमें खुशी होती है कि जब आप जैसे असातिज़ा जो इतनी मसरूफियात के बावजूद अपना वक्त भी देते हैं। और मैं बिलखसूस इस चीज़ पे कि आपने अभी तक ये नहीं कहा कि टाइम इज इनफ, और मुझे बहुत खुशी हुई जबकि बहुत सा वक्त हमने आपका लिया। सो मैं अगेन बहुत मशकूर हूँ आपका। साथ जज़ाकल्लाह। वेरी सून इंशाल्लाह हम आपके पास हाजिर होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। हसनैन, सर लाहौर में आपका ऑफिस कौन सी जगह पे है? सर आपका माइक म्यूट है। सर आपकी आवाज जी नहीं आ रही। जी मैं जी, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जौहर टाउन में है। अगर आप उस एम ग्राम सर्च करेंगे तो आपको उसका एड्रेस, हर चीज़ मिल जाएगी। मैं भी खैर वेब वालों को भी बता दूंगा। और इसके अलावा मॉल पे भी हमारा ऑफिस है, और फिर कराची में भी हम एक ऑफिस रखा हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लिटिगेशन उन जगहों पर बड़े बड़े जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी है। तो मैं वो आपको सारी डिटेल वहां से मिल जाएगी इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं होगा। थैंक यू सर। जौहर टाउन में कौन सी जगह पे है, आप रिपीट कर सकते हैं नेम? ये जी ये है इसका एड्रेस। जी वहाँ पे है 166 G1 जौहर टाउन जी। जी सर, थैंक यू। And now, without any further delay, I would like to call Hussein, President Legal Wave. Hussein, please unmute your mic and please address. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन है, प्रोबेबली लास्ट होगा, इसको हम कंक्लूड करते हैं। आपका वो टाइम ले लिया। मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जो हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, इसका जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है SCCP है, तो इसके ऊपर कौन से रेट्स टैक्स के अप्लाई होते हैं? इधर कॉर्पोरेट होते हैं या फिर जिस तरह हमारी सिंपल एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है वो वाले रेट अप्लाई होते हैं? इनकम टैक्स लॉ जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में रजिस्टर्ड फर्म को भी ट्रीट कर रहा है, और जो अनरजिस्टर्ड है, जैसे आप ऐसे 2 3 4 लोग मिलकर अपनी कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना के भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कंपनी के रेट्स जो है वो तो सिर्फ उन कंपनीज के हैं जो रजिस्टर्ड होंगे SCCP के साथ, और बाकी जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं उनके रेट्स डिफरेंट हैं। तो इस वक्त जो है इस सालों में तो रेट्स बहुत बड़े हैं। अब आम से जो इस साल 10 पर अगर आपके 10 मिलियन से ज़्यादा इनकम हुई है, जो अभी रिटर्न फाइल होंगी, तो वो टैक्स रेट तो 50% तक चले गए, जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा लिखा भी गया है। मगर जो आपका सवाल था, ये दोनों अलग-अलग कैटेगरीज कंपनी में जो है वो उसको कंसिडर करते हैं, जो SCCP में रजिस्टर्ड हैं जो बॉडीज, और जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाते हैं। अगर आपका पास वो फॉर्म सी मिल जाता है, वो उसको भी उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह के एक अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ट्रीट करते हैं। उनके रेट्स वही हैं जो यूजुअली इंडिविजुअल्स वाले रेट है। So, as we draw to a close, I would like to thank Dr. Kramullah once again for their valuable presentation and insights into tax litigation and consultancy. Sir, we are grateful for the time and wisdom
that you have shared with us today. Thank you so much, and thank you to all the participants for thoughtful question and engagement. On behalf of Legal Wave, I hope today's session has given you a clear picture of a career opportunity in tax law and inspired you as you have moved forward. And stay connected with Legal Wave for future events. We have many discussions and workshops planned to help bridge knowledge and practice in the legal and accounting field. Your feedback is always welcome, so feel free to reach out to us by email at legalwave2@gmail.com. Thank you so much, sir, once again, and thank you so much for joining the session. Jazakallah. बहुत शुक्रिया जी आप सबका. Have a good night. Thank you very much. Thank you so much, sir. Take care.